वर्तमान में आप पुलिस अधीक्षक देहात भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में आपने साइकिलिंग के माध्यम से गांव-गांव में जनसंपर्क कर लोगों को साइबर और महिला संबंधी अपराधों के संबंध में जागरूक किया है। आपके द्वारा महिला अधिकारों मानव दुर्व्यवहार के संबंध में कई कहानियां लिखी हुई हैं, जिसमें एक कहानी नेपथ्य को राष्ट्र पत्रिका में प्रकाशित किया गया। निवेदन आदरणीय मैम से कृपया मंच पर उपस्थित होकर अपने अनुभवों को साझा करें। विभिन्न पदस्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मानव दुर्व्यवहार जैसे अपराध से कार्य करने की आवश्यकता। इसके अंतर्गत मैंने बैतूल अध्ययन के लिए बैतूल हरदा जिले का चुनाव इसलिए किया क्योंकि इस क्षेत्र में बालिकाओं की गुमशुदगी के मामले सामने आ रहे हैं। प्राप्ति का प्रतिशत कम होने, ब्राह्मण होने के पश्चात इसे प्राप्त जानकारी मानव दुर्व्यवहार पुष्टि करती थी। शासन एवं पुलिस द्वारा मानव दुर्व्यवहार प्रयास किए जा रहे हैं। तथ्य इस क्षेत्र में कार्य कर रही सभी संस्थाओं के रेस्क्यू के आधार से सिद्ध होती है। इन मुद्दों को मैंने अपने शोध में उठाया है। शोध के अंतर्गत मैंने मानव दुर्व्यवहार श्रम की योजना मानव दुर्व्यवहार बंधा मजदूरी के विशेष संदर्भ में शोध पत्र किए हैं। शोध में इस क्षेत्र में और आगे कर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कृषि सुरला सर से अनुरोध करूंगा किरण प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। से कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेगा। अब मैं नहीं इसमें नहीं वीडियो नहीं देखें। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सीमा अलावा जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा के पद पर पदस्थ हैं, यदि आप उनका परिचय दीजिए। सीमा मैम 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप एसडीओपी सुजालपुर, मंडलेश्वर, बरेली, बैतूल, देवास जैसे सांप्रदायिक संवेदनशील जिलों में पदस्थ हैं। आप एसपी अजा को जैन एवं SC/ST के लोगों के हितों में कार्यरत रही हैं। 2012 से एसपी अजा को जैन, एडिशनल एसपी झाबुआ, अलीराजपुर एवं पिछले 2 साल से एडिशनल एसपी खंडवा के पद पर पदस्थ हैं। मैम, आपके द्वारा विशेष मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार, मानव अधिकार विषय पर इग्नू से डिप्लोमा किया तथा पुलिस कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के संबंध में आप रिसर्च कर रही हैं। जिस वर्ष आपकी PhD इसी वर्ष पूर्ण होने वाली है। आपके द्वारा कोविड-19 में कार्यरत खंडवा जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर रिसर्च किया, जिसे BPRNT ने कोविड-19 में स्पेशल एडिशन में प्रकाशित किया था। 2010 में देवास जिले में मानव देह व्यापार की 14 लड़कियों को एक साथ रेस्क्यू किया, जिन्हें एक वकील के द्वारा ही देह व्यापार में लगाया गया था। आपके द्वारा विभिन्न जिलों में मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कई सेमिनार आयोजित किए जाकर पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया। अपितु अलीराजपुर जिले में 56 कर्मचारियों को मानव दुर्व्यवहार के डिप्लोमा के लिए एडिशन कराया, जो अभी तक अधीनरत है। धन्यवाद मैम।
4 मिनट का समय दिया है, 4 मिनट थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी। एक तो सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ सर कि तुम अपना ये मैं चाह रही थी कि ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम करना है। जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया 1 साल हो गया, 5 साल मेरी डिमांड हम पूरी महिलाओं को उसके लिए महिला फोर्स ही हो सकता था। इवन मीटिंग्स में हर जगह स्पेशली मेरी डिमांड बहुत होती थी। ड्यूटी करी सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया कि हमारी महिलाओं के लिए वॉशरूम आपको सन 2010 की एक बार थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, लेकिन मीटिंग में मैंने बोला कि फैसिलिटी भी रखने के तो ठीक होगा, लेकिन अल्टीमेट वो हुआ। फिर थोड़ा सा देखने आता है सर, जब हम आप फील्ड में आप काम करते हो बात सुनिए नहीं, लेकिन फिर एक आध ने कहा कि ऐसे चिल्लाते हुए कोई नहीं, सर्च के माध्यम से जब कोई बात रखते हैं, कोई डेटा के माध्यम से कोई बात रखते हैं, ये बहुत अच्छे से सुनी जाती है और उसको फिर एक्सेप्ट भी किया जाता है कि कितने लोगों ने अच्छी, जब ये सब माइंडसेट बना है कितना लंबे टाइम से काम चल रहा था ये पता नहीं, लेकिन ये सब करने के लिए हमको 6 महीने लगे थे कि 6 महीने हमको टेकिंग करने में लगे, 6 महीने हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बच्चा भेजता था, जब हमको बच्चा रेस्क्यू मिला तब हम अपराध दर्ज करते हैं। ट्रैफिकिंग का केस ऐसा है सर कि उसमें ना पीड़ित को कोई प्रॉब्लम है ना उसमें, ये तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि हमारे क्राइम से बहुत अलग पार्ट है। हमारे पास कोई आता है फरियादी, हम रिपोर्ट लिखते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, सिंपल काम है। लेकिन आपको जब दिख रहा है कि कहीं क्राइम हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, वो थोड़ा सा वो माइंडसेट हमको लगता है मुझे बनाने की जरूरत है। और यही माइंडसेट चेंज करने के लिए जब डिप्लोमा किया, हालांकि वो 6 महीने का डिप्लोमा हमने 2 साल में किया, उसमें एग्जाम भी नहीं होती, 3 पेपर होते हैं, लेकिन 3 पेपर हमने मतलब लगातार हम दे नहीं पाए कभी, मतलब वो हमारे लिए प्रैक्टिस वाला काम नहीं था, कोई लड़ना लगा नहीं दे पाए 6 महीने में। फिर जब वो किया उसके बाद थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ प्रैक्टिस को, कोई भी लड़के भाग जाती है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अरे मैडम ये तो पहले कैरेक्टर को समझना और माइंडसेट चेंज करना पुलिस का। उसके लिए हमने जब ये हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कांड हुआ, हमने फिर से वहाँ पे 40-50 पुलिस वालों को थोड़ा सा ट्रेन किया, थोड़ा सा ट्रैफिकिंग समझाया, पढ़ाया, तब समझ में आया। एक्चुअली ये बच्चे हो रहे थे उन लोगों के लिए बिक रहे थे जिनके पास बच्चे हैं, तो पुलिस वालों को ये बोला था, मैंने अपना पाप पाल रहे हैं, तो अच्छे खासे बच्चे पाल रहे हैं, अपन उनसे लेके अपन है ना सेंटर भी लगाए, मतलब उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए कि ये ट्रैफिकिंग है, अगर आपको अडॉप्शन करना है तो कायदे से करो, ये चीज समझाने के लिए होता है। जब ये हुआ तो फिर सर हमने उनको डिप्लोमा के लिए उनको फॉर्म करवाया, डिप्लोमा 12 से 13 लोगों का
चल रहा है, थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें जब तक पुलिस में ना, जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए सर मैंने ये दोनों विषय में रिसर्च किए। और थोड़ा सा जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे हम, इसमें थोड़ा सा काम थैंक यू सीमा। सीमा हमारी बैचमेट भी है सर। अब मैं अध्यक्ष आदरणीय ऋषि शुक्ला सर से आग्रह करूंगा कि श्रीमती सीमा अलावा को प्रशस्ति पत्र देगा सम्मान से। इसकी वॉइस चेक करना। मैं आपका पुलिस अधीक्षक आजाद जिन्होंने पुलिस में कार्यरत महिलाओं पर हम भी तो बहन नाम से पुस्तक लिखी और वर्दी पहनी महिलाओं के संघर्षों की कहानियों को इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। निधि से मैं आग्रह करूंगा कि ज्योति ठाकुर परिचय दें। आदरणीय श्रीमती ज्योति, आप 2006 के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आपने पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप पुलिस अधीक्षक आजाद भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। एक ओर जहां आपने पुलिस अधिकारी के तौर में भूमिका का निर्वहन किया है, वहीं दूसरी ओर आपकी लेखन शैली का कोई जवाब नहीं है। निवेदन, मैं कृपया मंच पर उपस्थित होकर अपने अनुभव साझा करें। सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम भी तो हैं पुस्तक, जैसा कि सर ने बताया मेरी किताब का शीर्षक है। ये पुस्तक के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि आखिर ये किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई। 2006 बैच की ऑफिसर हूँ, 15 साल हुआ मुझे पुलिस विभाग में कार्यरत रहते हुए, मुझे 15 साल हो चुका है। इन 15 सालों में कई बार मेरे मन में विचार आए कि जब मैं फील्ड में रहती हूँ तो मैं उतना ध्यान अपने बच्चों पर और अपनी फैमिली पर नहीं दे पाती हूँ। जब मैं फील्ड में नहीं होती हूँ और अपनी फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो मैं फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इस तरह की समस्या, इस तरह की दुविधा क्यों है आखिर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में जब ये प्रश्न आए तो मैंने फिर ये विचार बनाया कि क्या इस तरह से परेशान केवल मैं ही हूँ या फिर मेरी तरह अन्य महिलाएं भी इस तरह की स्थिति से गुजरती हैं। तब फिर मैंने, चूंकि मेरी पोस्टिंग वर्तमान में एसपीएचए के भोपाल के पद पर है और मैंने अध्ययन के लिए भोपाल जोन को ही अपना अध्ययन का केंद्र बनाया और लगभग 437 महिलाओं को अध्ययन के लिए मैंने चुना और उनसे साक्षात्कार, समूह चर्चाएं और कुछ फीडबैक फॉर्म भी मैंने बनवाए थे, प्रिंट करवाए। और इस तरह से मैंने जो महिलाएं, जो 437 महिलाओं को मेरे पास आंकड़ा था, उसमें से मैंने मैदानी इकाइयों में काम करने वाली जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी करते हैं उनसे संपर्क स्थापित किया और जो महिलाएं दफ्तर इकाइयों में हैं उनसे भी मैंने संपर्क स्थापित कर दोनों जगह पर समानताएं क्या है, अंतर क्या है, किस तरह की समस्याएं वो फेस करती हैं और आखिर इस बात के पीछे वो कौन से कारण हैं कि महिलाएं दफ्तर इकाइयों में ज्यादा है और फील्ड में कम है। तो इस बात पर मैंने विस्तृत अध्ययन किया और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन से कारण हैं जो महिलाओं को फील्ड में रहकर और नेतृत्वकारी भूमिका में आने से रोकती हैं। तब कई कारण मेरे सामने निकल करके आए और मैंने समस्याएं जानने और उनकी जो बातें मैंने सुनी और उन्हीं से मैंने फिर समाधान भी जानने का प्रयास किया। समस्याएं, समाधान और वो किस तरह की पुलिस की कल्पना करती हैं, वो क्या सोचती है कि क्या सुविधाएं उनको दी जाए, किस तरह के ऐसे उनके लिए स्वरूप पुलिस का बनाया जाए कि वो दफ्तर इकाइयों की अपेक्षा मैदानी इकाइयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। तो सभी के विचारों को मैंने अपने साथ साझा किया, संकलित किया और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया इस शोध के माध्यम से कि मैं एक पुस्तक लिख सकूं। और मैंने वो प्रयास आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। 162 पेज की वो किताब जिसमें समस्याएं भी हैं
और सभी महिला अधिकारी कर्मचारियों के उसमें सुझाव भी है, और एक आदर्श नीति जो मुझे समझ में आई सबसे मिलने और सबसे बातें उनकी सुझाव लेने के बाद जो समझ में आया उसको संकलित करके और उसमें मैंने एक आदर्श नीति भी लिखी है। साथ ही इसमें हमारे भारत की जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है आदरणीय किरण बेदी मैडम, उनसे भी मैंने संपर्क स्थापित किया, क्योंकि उनका काफी लंबी जर्नी इस क्षेत्र में इस फील्ड में रही है, तक जिससे हम लाभान्वित हो सकते थे और हुए भी। उसको भी मैंने साक्षात्कार के रूप में उसमें सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर आदरणीय श्रीमती आशा गोपालन मैडम, उनका भी इंटरव्यू मैंने लिया और उनके भी अच्छे अच्छे सुझाव और उनका मार्गदर्शन मैंने अपनी इस पुस्तक में शामिल किया है। थैंक यू सो मच। मैं आदरणीय ऋषि शुक्ला सर से आग्रह करूंगा कि ज्योति राहुल जी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्योति ने एक उपन्यास भी लिखा हुआ है जो कि रसी से आत्मकथात्मक उपन्यास है, सफर में तुम बहुत थी, और जो संघर्षों की पूरी कहानी है वो निश्चित तौर पर पढ़ने में। अगले क्रम में मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शानू शर्मा को बुलाना चाहूंगा। Dr. Sharu Sharma, she is an assistant professor at the Department of Design, SPA Bhopal. She has completed PhD in design from IIT Kanpur. She is specialized in human swarm study and design research for mass coordination in a real-world complex system. Her research work is focused on the socially relevant design innovation, and for her innovation in design, Shanu won the Invention for the Decade Year 2 award. She is also the proud recipient of the Gandhian Young Technology. Now, I would like to call, please speak a few words about your experience. Yes. He got a chance that Karthik, he is my student. He was my student, now he is a and the lead designer. He completed his master's in design from SPA Bhopal. And he became one of the reasons that why we are here today. He completed his research about inclusion of justice. There was one criteria that we found in our work that women under any sort. So with his research work, we just tried, and the collaboration with MP Police Academy, because from there we got the real world experience of the people and also police officers who are working 24/7. So over to Karthik. Yeah. So, guys, thank you especially for very and someone for this opportunity, and also thank the scheme chief cases. Without this project would never have been possible. So, me coming from a design background, it's really difficult for us. We completely live with different kinds of social lives, and understanding the kind of world which we actually living in, and the people who are actually facing these kinds of societal problems, thinking about them itself is a task for us initially. So from there, I actually had this idea of starting this project. So this project was majorly initiated in bringing in centered design approaches for social problems. So this specific project was to improve the perception, behavior, and participation for domestic violence and as well as other violence against women in reporting. So initially it started as a broader perspective, this project. It was majorly for domestic violence, sorry, for women's safety. So I started this project as like as short research with my close friends in the college, and also ma'am was also my one of the first interviewees for this project, because just to know the kind of mindset which actually women have when they live in society. Even though we are educated and people with degrees, we do not think that, even I did not initially have the schools going through the
some lot of very sensitive stories I actually sought out from my friends who were kind of generous enough to share all those things with me, because me being a man, it's difficult for people to open up and then bring those kinds of things and talk to me. So it was a little difficult even after that, when starting this project with Vineet Kapoor sir, talking to victims of domestic violence as well as I also interviewed with like one rape victim as well. So it was really difficult for me to like get them talking to me as well, and it was really difficult for them to explain about things. So initially that's how it started. Then when we looking at the NCRB data, we found that around 40% of the cases which women face, they are actually caused not by any stranger, they are actually caused from family members. So this means that any women who is there in the society are studying with me. The stories itself was a little overwhelming for me, because I've never faced those kinds of problems as a child. I'm nice little guy, nobody messes with me. Talking it to some really vulnerable people, friends who are actually close to me. It really opened my eyes. It was a new perspective. So any person, any woman over here, she's more likely to be harassed or being violently treated from her family member rather than a stranger. So this all kind of changed my perspective on women's safety, because we study a lot of applications and a lot of digital interventions for women's safety. Everything, it all focused only on the third person, a stranger who is actually, it kinds of, what to say, it focuses on convicting a person, and then a third person who's causing this all of this to the women in the society as well as in the public places. Most of the applications, they concentrate pretty much major on that. They never focus on this very sensitive part of her trying to able to address a problem from a person whom she actually knows, or from a family member she actually knows. So the approach itself is completely different, because addressing that problem and this problem both are actually different. And addressing this problem of domestic violence and issues from their family members, it is much more wider circle where we can easily fit in the problems which women face in public spaces from strangers. So that's how it actually started. And from there, it involved us in learning how this why this violence against women as well as domestic violence is completely different from any kind of violence or cases. So for this, a lot of design research activities were involved. These were majorly, like I said, interviewing people, interviewing victims, as well as interviewing persons, because in most of the digital intervention and as well as many interventions which outside people other than police people bring in, they always victimize the police personnel who's actually handling these cases. They never understand the pain which they go through, and then the difficulty which they are actually having when bringing up these cases. So it's completely new thing. I thought we need a bridge to actually say that, see, in the society, both are actually the same, the victim as well as the police person. So the problem is actually not actually what the police system is not actually the problem, but the person who is actually misusing the system, be it a police person or be it a general public, is actually the root cause of this problem. So this research went on with that, and with respect to that, we found a lot of insight based on the behavioral issues, the cultural issues which women actually face by reporting these kinds of incidents, as well as the systemic issues when reporting and seeking help for women's safety, and especially domestic violence. And the application takes into account, after this, larger complexities involved in reporting against a family member, such as recurring nature of the abuse, because it's not a one-time action which actually happens. It happens repeatedly, and she has to report it each and every time it happens to her. And another important thing is the delaying of decision making because of difficulty in transfer as well as documentation of evidences to a stranger or a third party member, who in this case is the person who is actually handling the case. It's really difficult for that women to show very sensitive details to that kind of person. And in some cases, it is being misused as well by either personal or by any third party who's actually trying to help this people. And another important factor is the most of the cases, the individuals did not try to get conviction against the person or try to
like put that person into jail. They actually want to solve this issue, and for solving this issue, they want the problem with her and then the family member to be resolved rather than convicting a person. So this takes a completely different standpoint rather than addressing the problem of any women or any violence case. Actually. So these were the major areas which we had actually focused. And with these focus areas, we were able to ideate a lot of solutions and novel features. And most of them majorly focused on increasing the trust when approaching for help for these women. And also by this was done majorly by redefining the initial engagement through a community and social network, where this community actually shows that person what kind of activities are actually happening nearby, and then who is actually a part of it, so that she does not have to initially go to a strange place when she's facing this problem, like a police station, and then report it. She can actually see these are the evidence, these are the welfare activities that are happening. This officer has actually done it, and then she can directly approach that officer. That makes it much more comfortable for her to approach, very trustable thing for her. And also emphasizing on early detection and then building a kind of a customized support circle at an individual level. So each woman who's facing through it, she will be able to get in touch with the police person who will be assigned to her, as well as counselor, as well as a legal entity. So these three will be a part of her whole journey, because overcoming domestic violence is not a one day thing, it's a whole journey. So she has to take. It's not like I lost something and then I complained to them, okay, that guy. It's pretty difficult. More complex than that. So they will be a part of the journey, and also some some major focus were given to simplifying the legal procedures and evidence gathering through this platform. Some of the features like silent recording and then reporting it as when it happens within the customized loop of members who are a part of safety. And so that each and every time this recurring domestic violence takes place, the people who is in touch with her, they actually know these are these private people, the school of private people who's trying to help her. And the engagement which he's having itself will be redefined there. She'll be approaching the control room first, and then from there they'll be directing it her to with some members, and then so that all the evidences which she's presenting, all the evidences which she's uploading, these can all be tracked. And since this is through a government application, it can also be provided as evidence reports, which in most of the cases it is not as we think. So these were the major motto, and a lot of more features were also involved in this. And like I said, my hearty thanks to Dr. Sharma Sharma and then Vinit Kapoor sir for giving me this really huge opportunity. And this project needs a lot of resources. You cannot just go there and start this page. And Sridharan sir, definitely. And Sridharan sir, all the three need to help me and start off this project. So we are in a very initial stage of work. We would like this to implement in reality. For that, we want to continue this research to a bigger level. And as Ma'am said, that a lot of clients are happening. So we want to expand it. And I really want to emphasize one more thing, that academics and the real world experiences are the right ways for us to bring something concrete for people, solve some of the most challenging. Thank you. मैं आदरणीय ऋषि शुक्ला सर से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर श्याम शर्मा और कार्तिकेयन जी को पेपर सम्मान इसमें आपकी फोटो
बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच डायरेक्टर टूरिज्म बोर्ड श्री मनोज कुमार सिंह उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा कि सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर वीमेन इस विषय पर एक जो शॉर्ट फिल्म आपके द्वारा तैयार की गई, पहले 2 मिनट उसके विषय में कुछ हमको बताएं, फिर उस फिल्म को हम आपके बीच दिखाएंगे। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह सर। सम्माननीय मंच और उपस्थित साथियों, इस परियोजना को बनाने के लिए हमारे मार्गदर्शक शुक्ला साहब हमारे बीच में हैं, जो प्रबंध संचालक हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में हमने ये फिल्म भी बनाई और इस परियोजना को एक रूप दिया गया है। इस परियोजना को इसलिए सोच करके तैयार किया गया कि जब कोई भी महिला टूरिस्ट जब अपने प्लान को तैयार करते हैं और वो फिर टूरिज्म प्लेस पर आकर के विजिट करते हैं, तो उन्हें भय रहित होकर के वो अपना प्लान बना सकें, उसके बारे में सोच सकें, और फिर जब टूरिज्म डेस्टिनेशन पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और किस प्रकार से यदि कोई समस्या आ गई है उस मतलब महिला टूरिस्ट को, तो उसका निदान कैसे हो सकता है और उसको सपोर्ट कौन कौन से तरीके से दिए जा सकते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके कुछ एक्टिविटीज डिजाइन की गई कि ये एक्टिविटीज यदि हम परियोजना में लेकर के आते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 50 पर्यटन स्थलों के लिए जो 6 कल्चरल जोन्स में विभक्त हैं और करीब 35 जिलों में अलग अलग स्थानों पर हैं, वहां पर इस परियोजना को एनजीओ पार्टनर्स के माध्यम से तैयार किया गया है और इसको शुरू किया गया है। ये पहला चरण है और इस चरण के अनुभव के आधार पर हम लोग इसको आगे और ले जाएंगे। मैं अनुरोध पे धन्यवाद। Lights off. Lights off. Lights off. Lights off the movie. See how much they're playing. Set moves. Madhya Pradesh Tourism Board, along with its different verticals and Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, we make safe tourism destination for women in MP. There is a need to enhance the safety and security of women, especially during solo traveling. And we are not talking about tourist destinations, but it should happen anywhere in India. The reasons behind this unsafe environment are fear of crime against women, unavailability of public facilities, that is, women-friendly toilets, lack of public places like parks, women-friendly stay facility, market areas, and proper street lights. Another major reason is lack of women-owned services, or in other words, limited women workforce. Therefore, Madhya Pradesh Tourism Board is launching the project Safe Tourism Destinations for Women in Madhya Pradesh. This is the first tourism project sanctioned by Ministry of Women and Child Development, Government of India, under Nirbhaya scheme. Few of the major objectives of this project are to enable fearless women-friendly environment and workforce, coordination among stakeholders for development of women-friendly public infrastructure, community participation, and awareness towards women's safety, and building of community-based institutions. We also intend to increase livelihood opportunities for girls and women. Also, we would like to promote women workforce participation through skill enhancement programs. We will achieve our objectives with the help of various activities like capacity building and sensitization of all concerned stakeholders, strengthening of safety mechanism through support of all languages, skill enhancement of around 10,000 women, self-defense training for around 40,000 women, of infravets, and coordination with concerned departments, information and local support system, presence with line departments, government and private players, and formation of associations and federations of stakeholders for support in phase 1. We have also worked on a strategy which will help us to implement this plan. According to it, we will apply cluster approach, in which we have 20 clusters which have 50 destinations. Involvement of project support organizations
and NGOs on implementation. We include community-based organizations, together with a resource pool of local influencers. We'll create peer pressure groups, which will have around 100 clubs, more than 20 federations, and a stadium. Lead employment and skill gap mapping. This is a 3+2 is equal to 5-year implementation plan. We'll coordinate with other tourism projects for education and employment. These projects being implemented under umbrella of Responsible Tourism Mission will be rural, tribal, and agricultural tourism through women leadership in village. Homestay promotion in rural, urban, and agricultural area, social, economical, and environmental inclusion program, art and craft promotion among women in city and village, skill development program for local youth around tourist destination. To make tourist destinations safe for women, we need to maximize women work participation at tourist destinations. They can be e-rickshaw or taxi driver, bus pradarshak, escort leader, city explorer, location manager, shopkeeper, hawker, security guard, computer operator, tour expert, cook, steward, bellgirls, front office, delivery girls, ticketing or billing, street food vendors, housekeeping, handicraft, or guest house manager. India is our technical and knowledge partner of the project. To converge this model, Madhya Pradesh Tourism Board will work with Women and Child Development Department, Police Department, Education Department, Rural Development, Transport Department, and Urban Development Department, Forest Department, Ministry of Tourism, Government of India. We have presented the project of Safe Tourism Destination for Women in UN Women Morocco Conference in 2020. Many Asian countries appreciated the model in tourism sector. We have been nominated as Ones to Watch in 2021 in WTM London under the category of Responsible Tourism. मैं सम्मानीय मंच को बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक गोपाल आदरणीय किरणलता किरकिटा मैम ने उनकी लिखी हुई कहानी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लिखी हुई कहानी पर एक फिल्म का भी निर्माण होगा जो कि विभिन्न मंचों पर पुरस्कृत भी है। उसका एक बहुत ही कर्णप्रिय गीत है, तो उसको निश्चित तौर पे सर आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे, आपकी अनुमति होती है। हमारे पिताजी ने तुम्हारी रुचि नहीं करी। क्यों रखे तुझे ऐसे पर्दे में, क्यों करे मुझको गुड़िया से मेरी बेचना अब को तोड़ खेल मेरी सारे
जीत लूं मैं सारे चलूं आज जीत लूं मैं सारे मेरा जिंदरा मेरा जितना कर्णप्रिय उतना ही हृदय को छू लेने वाला भी है। अब समय आ गया है उद्बोधन का और हमारे मंचासी अतिथियों को सुनने का। मैं सबसे पहले आदरणीय ममता कोहली मैम जो कि डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज की विशेषज्ञ से अनुरोध करूंगा कि वे जेंडर लॉ एंड सेफ्टी इनिशिएटिव्स एंड इम्परेटिव्स पर अपने विचार व्यक्त करें। मैम ममता कोहली। ये लास्ट फिल्म जैसे मैंने कहा बहुत ही भावुक थी। लास्ट में पूरा देख पाते तो ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश हाई कमीशन यहाँ क्या कर रहा है। दो चीजें बता दूं, हम लोग एमपी में पहले बहुत काम करते 2015-2016 में थोड़ा कम हो गया, पर एमपी से हम लोगों का ऐसे कि बहुत गहरा नाता है। हम लोगों ने अर्बन रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड सब पे बहुत काम किया है और साथ में इश्यूज अराउंड वायलेंस, सिटी, इस पे भी बहुत काम किया। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी से समझ में जैसे आप सब ने कहा, एक तो ये है कि वुमन इज सेफ एंड द अदर इज शी फील्स सेफ। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसको सेफ महसूस भी उतना करे जितना वो एक्चुअली सेफ भी है, सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करे। बस इसमें थोड़ा सा ये बोला जाता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई ये क्यों जरूरी है, यस इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू, एक डिग्निटी का इशू है ये, पर ये सेफ्टी जो है ना, ये बहुत लाइफ के डिसीजंस लड़कियों के लिए स्पेशली तय करती है। कहाँ तक पढ़ेगी, कब उसकी शादी होगी, कहाँ काम करने जाएगी, कितनी दूर काम करने जाएगी, क्या कपड़े पहनेगी, कैसे घूमेगी, कितने बजे तक घूमेगी। बेशक वो गांव में रहती है, वो शायद वो शहर में रहती है, all these life decisions are depending on that। मेरी खुद की कार्तिक आप बता रहे थे, हम जब दिल्ली में बड़े हो रहे थे, जो बसों में हमारे साथ व्यवहार हुआ वो अभी तक आप नहीं भूल सकते। इट जस्ट स्टेज इन योर माइंड कि मे बी देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद मी कि किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से छेड़ा। तो अपने आप को बहुत काउंसलिंग भी करना पड़ता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों जरूरी है कि हम सेफ्टी पे काम करें। क्योंकि हम एक सबसे पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि मैंने कोई ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं देखा जो इतने एविडेंस बेस्ड काम कर रहा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉलिसीज अगर एविडेंस के बिना बनेंगी तो वो खोटी होंगी, और एविडेंस अगर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो वो एक अपनी बस एक एकेडमिक इंटरेस्ट बन के रह जाता है। तो ये पॉलिसी प्रैक्टिस का समावेश बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। सॉरी, तीसरी बात जो कहना चाह रही थी कि सेफ्टी के बारे में, बैलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, इसका बहुत लंबा इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट होता है। तो रिसर्च ने ये भी बताया है कि जिन महिलाओं ने वायलेंस फेस की है उनके बच्चे भी आज वायलेंस फेस करते हैं, और जिन लोगों ने वायलेंस परपेट्रेट की है वो उनके बच्चे भी चांसेस है कि वो भी आगे परपेट्रेट करेंगे, वो भी वायलेंट बन जाएंगे। सो दीज आर इम्पोर्टेंट, इसका बहुत लंबा टर्म इम्पैक्ट रहता है। हम लोगों ने एज यूके इस पे काफी काम किया है, ग्लोबली भी और इंडिया में। Basically focusing on कि भैया okay, so what works? Everybody talks about it, but really what works? We've done work on modern labor trafficking, child labor, safe migration, so on and so forth. But just to reflect, not सारा एक्सपीरियंस की बात नहीं रही, but जो मुझे मेरे काम में लगा 4-5 चीजें, especially given the conversation, important and that stayed with me. Were this. One was around behavior change.
जब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ महिलाएं नहीं, उसके आसपास का माहौल और उसके आसपास के सभी लोगों को उसमें करना। सो हम लोगों ने कितना ही काफी रिगरस बिहार जैसी जगह में रूरल एरियाज में RCT किया था, which is the toughest form of building elements, where we saw कि young boys and girls की कैसे उनकी सोच बदल सकते हैं. So we did that. We used NYKS का जो प्लेटफॉर्म होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू किया था. Boys between 13 to 18 years, और research structure जैसे इसके साथ में critical ethics. So at the end of the research, we found that their thinking had shifted quite a lot, significantly. In things like कि वो अभी टीचिंग नहीं करते थे, वो बैठ के लड़कियों को ताड़ते नहीं थे जब वो स्टॉप पे, वो घर में हेल्प करते थे, वो अगर वो अपनी बहनों की एजुकेशन के बारे में बातचीत करते थे. और ऐसा, और कई बार हम सोचते हैं कि ये डिसीजन, ये चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, कि शायद थोड़ा टेम्पररी है. 5 साल बाद जब टीम दोबारा वहां गई, अपनी लड़कों से बात की, तो जाना कि वो इंटीग्रेट हो चुका थी कोई लर्निंग होगी. So which was good, which has actually made us all really happy कि इतना longitudinal डेटा कम ही मिलता है. तो कहने लगे थे कि जितनी जल्दी हम इन सब मुद्दों पे बात करना शुरू करें, उतना जल्दी ही बदलाव आएगा, उतना जल्दी ही बदलाव रुकेगा. तो ये टेम्पररी नहीं है. दूसरा था कि हम लोगों ने SHGs के साथ भी इसी तरह का अप्रोच फॉलो किया था. उसमें भी देखा कि महिलाओं का कॉन्फिडेंस, जब वो कुछ समझती हैं, अपने फाइनेंशियल को समझती हैं, तो वो अपने राइट्स और अपनी घर में अपनी पहचान को समाज में भी पहचान भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है. दूसरा, हमने तीसरा कई बार होता है कि स्टिग्मा और शेम बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग टू क्रिमिनल वेरी वायलेंट एक्ट्स. एक मुझे याद है, हमारी एक पार्टनर संस्था थी, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन किया था, जिसमें उन्होंने जो सर्वाइवर्स थे और सर्वाइवर्स की फैमिलीज थी, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम अपने आप खड़े होकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करो. उससे क्या हुआ कि वो जो आपको शेम होती है ना कि मेरे परिवार के साथ हुआ, मैं कैसे दुनिया को फेस कर, वो थोड़ा सा है. वो खुद अपने आप को इस तरह के चैंपियंस बन गए. और जैसे रेप सर्वाइवर के फादर, ब्रदर, they became more like they could relate to these and they could become better. What's the right word? ये मैं कोविड इम्पैक्ट कहती हूँ कि मेरा कोविड इम्पैक्ट ब्रेन फॉर्म हो गया. But so they become champions for stuff. तो तीसरा तो ये तो बिहेवियर चेंज करता है. एक था अराउंड institutions, how the institution should respond. So definitely, because a responsive system gives the woman a confidence कि हाँ, there is somebody who cares for me, there is a system, there is an institution. अगर मैं जाऊँगी तो मुझे जज नहीं करेंगे, मेरी सपोर्ट करेंगे और मेरे को परेशान नहीं करेंगे. तो बेशक वो सिस्टम को यूज करे ना करे, बट सपोर्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अस द कॉन्फिडेंस कि हाँ, वो डील कर सकती है. ये अगर हमारी स्टडीज में मतलब सो जैसे हेल्पलाइंस हैं, डेस्क्स हैं, but also the standard operating protocols वगैरह हैं, उन सब से बहुत अंतर पड़ता है as to how आप उसको छोड़ जाइए कि ये अफसर का निजी सोच क्या है, वो कैसे देखते हैं, पर अगर वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो अपने आप में ही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकता है. पर CCTV कैमरास में अभी आई थिंक दैट्स समथिंग मेबी यू कैन पिक अप कि एक रिसर्च होनी चाहिए CCTV कैमरास कितना प्रिवेंशन में काम करता है. ऑफ कोर्स पोस्ट इवेंट इट गिव्स यू अ लॉट, but does it actually help prevent crime? The evidence is mixed out there, so that's something to do. And finally, what we also saw was the cross-sectoral response. I remember this workshop, these constituencies we had where जहाँ पे police, hospital, medical, administrator, all were together. Because जब case होता है, कोई incident होता है, हर एक का अपना अपना role होता है, और role बहुत coordinated तरीके से play करना. So that again, that approach was really, really important. And
I think it's something अगर हम actively काम करें बाकी partners के साथ. Just want to take 2 more minutes on the work we've done around safe cities, and just to tell you, हमारी काफी इस काम की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी. हमने वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की असेसमेंट की थी, सेफ्टी पिन जो एक ऐप है उसको हम लोगों ने लॉन्च किया. So it again showed the same thing कि कैसे transport system doesn't understand कि women के mobility patterns क्या हैं, कब जाती हैं, किस लिए जाती हैं, किस काम के लिए जाती हैं, safety issues, so on and so forth. The issue around lighting, eyes on the street, dark spots, ये सब cover किया थे. And I'm happy to see that more and more cities are now looking at it in a very, very constructive manner, and beyond just beyond just putting cameras and beyond just looking at it from a very functional point of view. But the other thing that we also realized कि हम लोग कभी सेफ सिटीज की बात करते हैं, कभी हम चाइल्ड फ्रेंडली सिटीज की बात करते हैं, कभी हम एक्सेसिबल सिटीज की बात करते हैं. सिटी तो एक ही होती है, सिटी एक ही बार. So if we started a new program, I wouldn't call it a program, a new approach where you look at how do you create a safe, accessible and inclusive city. So if a city is safe, it should also be accessible. Like people with disability, older people, हम सब कभी ना कभी स्थिति से गुजरे हैं कि हम लोगों को support की जरूरत है. So that's a new thing, not really a new thing that we are working on. And that's something that I'm really keen कि हम इस कार्यक्रम को भी उस approach के साथ जोड़ें. Anyway, again, big thank you. मैंने आप सबकी story से already इतना कुछ सुन लिया, सीख लिया और inspire हो गया है. I really look forward to working more and more with you. And very much thank you to Vineet and everybody for this very, very interesting concept and approach. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would request Professor N. Sridharan sir, who is the director of SPA. मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो सेफ सिटीज एंड जेंडर कंसर्न्स के संबंध में विचार देते हैं. Good afternoon to all of you. I'm thankful to the Police Academy to bringing this very, very laudable things together. With tourism, with city planning and the academics and all. And thanks a lot for Dr. Vineet Kapoor. We have been interacting for the past 3 years. But it's a good thing that individually we used to do it, like with the tourism department, we have been doing a lot of work independently, but in terms of building, this is the first time to come out with the human face and then trying to work it together. And I'm really thankful to all the August audience here. We could learn whenever they're talking about each one that experiences is something great. Now, I want to point out that we have been trying right from 90s onwards, especially in the late 90s. We started in Delhi in terms of the safe cities, and we had some of the thesis students who have been working on this with the Delhi police. And that too, at the time, in the 80s and 90s, when the things started, east of, you can say beyond the Yamuna, there was a lot of problem. Okay. At the time, we tried to work it out, how to address this issue of safety of women, and also in terms of riots that happened. How to work out with these issues. So when you talked about that, even in the case of riots and in the case of some disaster that happened, the first thing is the women is an issue. Okay, even now, if it happened just about a month back, there's some things which happen in terms of fire accident in Delhi. The first thing that lost is because of women's lives, which is gone, because they are working on the gas, they are working on some electricity, something that is how to address it. So from the city planning point of view, how to address that, scale it up, scale it down. We started with the neighborhood level, mohalla time. Okay. Initially, we never had some kind of visualization. Now, thanks to this new what Karthikeyan is did in terms of visualization, we started discussing earlier how to scale it up from that mohalla area
which is there in the 74th Amendment Act, and come out in terms of ward level, and then scale it up to the city level. This is a big challenge which, as a planners, we try to do. Second, in terms of addressing the issue of density, because density is always related to the cost. Okay, that's true. When you have in terms of police ward and other thing, is some administrative wards is different, census ward is different. How to address that issue in terms of convergence, it's a big challenge for us to work, especially for the police. Okay, it's a big issue. How to address it in terms of density and how to address it issue in terms of neighborhood planning to all. And then the tendency is generally to tend towards, okay, all these slum areas are prone for all kind of activities, all kind of things, especially for women also there is an issue. So how to address this issue is a big challenge even for that. Now we are coming out with what is called as local area plan, both in the smart city as well as in the case of master plan, how to address this issue. In fact, even here, even in Roshna, what is that, in the new market also we are trying to do some kind of LAP for this, which will address that issue. Now, apart from this, whatever we are addressing this through the DRC, through the JIVA and Parima, what is going to be in terms of future? I will try to address the issue in terms of research, which Dr. Shanu has talked about it, how we can link it together in terms of police academy as well as in the women MP police. I just want to give a small example where I was so excited and also happy to inform you something. So far, we have been giving, the cases which have been told to us. My own experience, which I want to share with you. In the Bagodia festival, I have been thinking, okay, for the past 2 years, I've been thinking I'll go there. Because of COVID, I couldn't do it. But it has been happening, as someone has already pointed out, it's been happening. I think before this, I think Principal Secretary Sir was telling about this just before this meeting. This time I had an opportunity to go there. I was sitting with the police that camp area. 2 of the small girls came crying. I'm so proud that police people are here were able to do that. They caught them right in the beginning. So they started asking, where is your mummy? Where is your papa? Kiske saath aaya? Kaun sa gaon se aaya? So they give them some chai, then some ice cream. Okay, this was happening. The whole process, I was sitting behind, and then the whole process is happening. Immediately, the digital. They informed through, not through wireless, through WhatsApp, they informed all the police people in that area. And they started announcing this. First time I saw something in my own heart that what's happening here, what's happening in this whole thing. Immediately they are able to catch hold of that the mother and then bring them to this particular thing. I'm so proud of MP police. Okay. Because it's almost 50,000 people. I was not able to walk around with my camera and with all the things. Okay. And that is where the convergence comes in between the tourism and with this one, what's happening in this. In fact, that's when we started off. I was discussing with Dr. Kapoor also. In Omkareshwar is going to be the big event that's going to happen in 2023. In this Shivratri, we thought we can use the drone along with our experts we are here. We can identify that and try to find out in terms of planning the whole thing for the future. Similarly, in terms of Kumbh, how we can think about these things. And that also the same thing. Why I'm linking this is most of these cases which comes in. When I am walking, even in this Bagodia festival, most of the people who come for only women and far off places. I saw almost like 15 kilometers they are walking together. What is safe? That's one. Similarly, another places where I went, for going to the school, thanks to the cycle which is happening here, which is distributed to the school kids, especially for the girls. Now they are driving alone in that national highway. Okay, it's something where the safety has to be very, very important. How to bring in this particular thing, how to plan it. So we also again associated with them, we thought, let's talk with peri-urban area.
and find out about the mobility through digital, how to identify through the drone, how to identify through the remote, with this, and address the issue in terms of these groups, which we can think about in terms of this. I'm so happy that through the SDG 16 he's talking about, we should also link it with that of SDG 11, how to address some of these issues for the women. Now, thanks to a small incident which happened way back in 1980s. I was in Haryana. I should not say that which place and all. So I was in the school, which is only for the girls. When they went out, I was talking to them, "Oh, you are safe and you are fine." "No, sir, I've been beaten up." "For what?" I said, "Whenever the girls go out, they go together for easy." So, but the teacher was, sorry to say, that it's also a male member like me. But not like so crucial, but crude person, beaten up. Why you are laughing, why you are going out, and then you're coming back after half an hour. So the kids left the school, which I have been going there for 3 years to develop that through DST, Department of Science and Technology, some work there. I still, it came into my mind long back. I mean, every time it says, what's happening here? So really, I've been trying to the PM, Honorable PM. We come out with Swachh Bharat, and then especially addressing the issue of schools for this particular thing. Now, these are all small things, how to link it in terms of what is called digitalization. And within that digitalization, how do you think about it in terms of citizen science? How to use the WhatsApp, which I've been using it for disaster, but how do you address that issue in terms of other dimensions, in terms of women and all? I'm glad that Karthikeyan came out with this kind of thing using this aspect. The next is in terms of intergeneration. I mean, Madam talked about intergeneration issue now, which we found out something coming from a very orthodox family myself. Even now, when I talk to my mom, no, don't tell this. No, that's what happens, especially for women. Okay, whenever my nieces discuss something about it, it's not being discussed with their father. It's not discussed with mother. Okay, now even the intergeneration thing, the communication, how do you break it? It's something which through kind of a video or a media, how do you come out with that intergenerational gap, which is existing, which is going to be widened in 2031 by census as well as by, we have already seen the more women has come by 2021. It's already come in the SRS information, data information. Now, what is going to be by 2041, 2051, the women is going to be more. If it is so, how to address that, how to change our mindset of the men. Gender doesn't mean that only about the girls, it's also about the male member as well. Now, that's especially the police have to come out and say that how we can change that mindset. Okay. So these are all the various aspects in terms of intergenerational, intersectoral, and also how to address the issue of citizen science for this, how to do it regularly basis, and come out with, concentrate on certain spots in terms of, let's talk about that local area plan, also about the Kumbh Mela, about other festivals, something like our Bogota festival and other. How to address these things well in prepared for this kind of thing. I think I'll stop here and then maybe we have a session also. We'll discuss much more about it, how to go about it in terms of city planning and also address this issue. Thank you very much for this very good opportunity for all of us from School of Planning. We thank you for this. बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच भोपाल पुलिस आयुक्त आदरणीय मकरंद देवस्कर सर मौजूद है। सर से अनुरोध करूंगा कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। शुक्ला सर, अमन रॉय मैडम, प्रोफेसर श्रीधरन, कोहली मैडम, शुक्ला सर और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागीगण। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही एक
it was a sort of a pleasant surprise. मैं यद्यपि भोपाल में पिछले कई सालों से रह रहा था और मैं इस बातों से कई बातों से अनभिज्ञ था कि रिसर्च से संबंधित कई मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में किस प्रकार से रिसर्च किया जा सकता है, किस प्रकार से जितने भी एग्जीक्यूटिव फोर्स है, फाइनली जो फोर्स पब्लिक को राहत पहुंचा रही है, उसके लिए किस प्रकार से उपयोगी रिसर्च हो सकता है। परंतु ये विषय बहुत ही सामयिक आप लोगों ने चुना है, लेकिन ये भी है कि आज एक थाने में अगर कोई कर्मचारी, चाहे पुरुष कर्मचारी चाहे महिला कर्मचारी काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यही उसे बताना है कि कौन अच्छा पुलिस अधिकारी होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी किसी भी अच्छे पुलिस अधिकारी की परिभाषा अभी तक नहीं बन पाई है। तो यद्यपि आप लोग यदि आप रिसर्च करें तो कृपया करके इस परिभाषा से जरूर हमको अवगत जरूर कराएं कि अच्छा पुलिस अधिकारी कौन होता है। अब मैं मुझे जो दिया हुआ विषय है मैं उस पर आऊँगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू जस्टिस पर आऊँगा। सबसे पहला, जब मैंने ये अभी दिया हुआ विषय जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में पहला प्रश्न यही आया था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में फर्क क्या है। कई हम बहुत ही इंटरचेंजेबली उसे उपयोग करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सेफ्टी। पर जो मेरा आकलन है कि सेफ्टी एक सॉर्ट ऑफ एक एनवायरमेंटल फीचर है कि अगर कोई सड़क है, उसमें कोई स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, डिवाइडर बने हुए हैं, तो एक ये सेफ सड़क है। लेकिन अगर आपने हेलमेट पहना है तो आपने अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर के इसी समझ के साथ मैं इस विषय पर आगे बोलना शुरू करूंगा कि सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ही मतलब जैसा अभी श्रीधर सर बता रहे थे, सिटी प्लानिंग के बारे में बता रहे थे, मैडम ने कई अपने ट्रेनिंग्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम एक शिफ्ट ला सकते हैं बिहेवियर में, आसपास के जो बिहेवियर के शिफ्ट में शिफ्ट ला सकते हैं। सेफ्टी एक कल्चरल फिनोमेना धीरे धीरे बनता जाता है। कैसे हम बोलते हैं कि कुछ शहर जो है वो बड़े अच्छे शहर है, मतलब वो बड़े सेफ शहर है कि वहाँ पे रात में 12 बजे भी महिलाएं निकल जाए तो कोई कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरे शहरों को बोलते हैं 7 बजे के बाद नहीं, साथ में जाना, 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठी करके निकालना, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक अनसेफ शहर है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सेफ्टी को एक कल्चर में उतारें, हम सेफ्टी को एक अपने इंस्टीट्यूशनल चीज़ों का हिस्सा बनाएं कि कैसे हम सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। सड़क शहर बन रहे हैं, क्या हमें उसमें एक कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स नहीं डालने चाहिए कि अगर कोई इतने बाय इतने का शॉप बन रहा है या कोई फैसिलिटी बन रही है तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के फीचर्स रहने चाहिए ताकि वह एक सेफ इस्टेब्लिशमेंट बन सके और धीरे धीरे सेफ इस्टेब्लिशमेंट्स का जो समेशन है वो एक सेफ सोसाइटी को हम अचीव कर पाए। सिक्योरिटी अगर किसी की, यदि हम में से किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमें मानना चाहिए कि वह एक सिस्टम का फेलियर है। यदि अगर मुझे किसी को गनमैन देना पड़ रहा है या पीएसओ देना पड़ रहा है तो समहाउ वो व्यक्ति जो है अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। अब ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी को एक फेलियर का जीता जागता उदाहरण न मानते हुए उसे एक अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक्स वाई जेड, जेड प्लस जेड स्पेशल। लेकिन वो सॉर्ट ऑफ एक
फेलियर्स हैं कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट, चाहे वो वीआईपी हो या नॉन वीआईपी हो, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण सिक्योरिटी की हमको आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम घर में ताला लगा रहे हैं तो उसका मतलब है कि चोर आसपास घूम रहे हैं। तो सिक्योरिटी एक महंगा उपाय रहता है, ताकि चाहे आपको ताला खरीदने से लेकर के आपको पीएसओ रखना पड़े, वह एक बहुत ही महंगा, और एक कोई भी आम गरीब आदमी उसको नहीं उसे पा सकता है, चाहे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी। तो शासन का, सरकारों का यह उद्देश्य रहता है कि हम एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट हम अपने नागरिकों को दे पाए जिसमें सिक्योरिटी की आवश्यकता कम से कम पड़े। अब तीसरा जो बिंदु है वो है एक्सेस टू जस्टिस। अब मध्य प्रदेश का चाहे एक बहुत ही डूबियस रिकॉर्ड है कि वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेप्स इन इंडिया। अब डेफिनेटली ये चीज जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, किसी भी फोरम पे जाते हैं, कि ये डेटा हम लोगों के अगेंस्ट में हमेशा से ही यूज किया जाता रहा है। हमेशा जब भी हम कुछ भी बात अपनी कहना चाहें, सबसे पहले वो डेटा हम पर जरूर फेंका जाएगा कि 5,500 रेप हो गए हैं, और इतने सारे पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हुए हैं, और अभी भी इस करंट ईयर में भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसके बारे में मैं जस्ट आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे घर में 3 महिलाएं हैं। अब मेरा जो खुद का अनुभव यह है कि यदि वो तीनों महिलाएं, जैसे मेरी पत्नी और 2 बच्चियां हैं, अगर मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएं तो मतलब मैं इसका मतलब निकालता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन ठीक है, मैं उनको संभाल लूंगा। और दूसरा ऑप्शन जो मेरे साथ कभी कभी होता है कि अगर वो तीनों महिलाएं भारी चुप रहे, मुझसे बात ही ना करें, वो मतलब वो एक ऑप्शन रहता है कि वो मतलब कुछ बहुत ही बड़ी कोई चीज कर दी है जो उनके बाहर की चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा जो फर्स्ट वाले सिचुएशन है वो उसे मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि अगर मेरे शहर की महिलाएं अगर सीख रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, उसकी मांग कर रही हैं कि कार्रवाई की जाए, तो मैं मानता हूं कि मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन है मतलब उम्मीद है, उनको मुझसे उम्मीद है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग लार्जेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर हम लोग रिपोर्ट करते हैं, आई डू फील कि यही एक्सेस ऑफ जस्टिस जो है हम हर आदमी, महिला, बच्चे को हम दे पाए, वो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर सके। हर कॉल जो हमारे डायल 100 पे आ रहा है वो एक हमको बता रहा है कि ये मुझे उस आदमी को मुझसे कुछ उम्मीद है। अब दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि एक्सेस ऑफ जस्टिस को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ता जाता है, किसी भी शहर का जब मिडिल क्लास बढ़ता जाएगा तो वह अपने गवर्नमेंट से बेहतर म्यूनिसिपल सर्विसेज की मांग करता है। म्यूनिसिपल सर्विसेज मतलब म्यूनिसिपैलिटी की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज और पुलिस की सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज उसको चाहिए, और वो एक बहुत ही इम्पर्सनल तरीके से चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं किसी पार्षद को जानूं तभी मेरे घर का कचरा साफ हो, या मैं किसी नेता को जानूं तभी मेरी रिपोर्ट लिखी जाए। वो एक बहुत ही इम्पर्सनल सिस्टम चाहता है, जो उसका बिना उसकी सूरत देखे, बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी
उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखें, उसे वो सर्विस दे सके। हमें इसी प्रकार के एक सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ना है, एक बहुत ही इम्पर्सनल बट एट द सेम टाइम एम्पैथेटिक, और एक बहुत ही एसओपी से गवर्न सिस्टम। उसे मालूम रहे कि भाई मैंने ये इस बात की रिपोर्ट की है तो ये चीज होगी, ये सेक्शन लगेगा, इसमें इतने साल की इतने टाइम में चालान पुटअप होगा, इतने टाइम में गिरफ्तारी होगी, और ये मुझे इतना रिसीट रिलीज मिलेगा। और वो एसओपीज जो है बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से सबको मालूम रहे, सबको मतलब जो यूजर एजेंसी यूजर है उसे मालूम रहनी चाहिए, जो सर्विस देने वाली एजेंसी है उसे मालूम रहनी चाहिए, और सभी जितने भी उस सर्विस को गेज करने वाले अथॉरिटीज हैं उनको भी क्लियर रहना चाहिए। हर कोई एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए कि अगर एक कोई रेप विक्टिम आ रहा है तो उसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और वो एसओपीज, जैसा कि एक जीवन समाज है, वो एसओपीज भी जीवंत रहनी चाहिए कि वह भी समय समय पर बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे, चेंज होती रहे, और उनमें समय समय पर एविडेंस बेस्ड चेंजेस हम लोग ला पाए। एक बार फिर मैं अपना एड्रेस खत्म करने के पहले मैं एक और चीज एविडेंस बेस्ड चाहूंगा कि हर कोई मानता है कि गश्त होनी चाहिए। मैं एक जब जिले में पुलिस अधीक्षक था, तब एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आज कोई भी गश्त निकाल कोई गश्त के लिए नहीं जाएगा, देखिए चोरियां होती हैं क्या। तो हम लोगों ने करीब 2-3 दिन एक भी पॉइंट गश्त का नहीं निकला और कहीं पर कोई चोरी नहीं। और एक बार खूब जिले में चोरियां, एक डकैतियां, लूट चल रहा था, तो मैं खुद निकला था शहर में, सड़कों पे मारे मारे घूमा, तब भी 4 जगह ताले टूट गए थे। तो कुल मिलाकर के पुलिसिंग को बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली एक जनरल एक हमारी आदत रहती है एनेक्डोटल एविडेंस पर चीजें फॉर्मुलेट करने की कि अरे वो तो अच्छा ये है तो ऐसा सर यहाँ पे पॉइंट लगा दो कुछ चोटियां मिल जाती है। एब्सोल्युटली नो एविडेंस, नथिंग। और हम लोग उस पर काम करते रहते हैं बिल्कुल जो एज इफ की वर्क कोई बहुत ही पूरी टेक्स्ट में लिखी हुई कोई चीज है। तो कुल मिलाकर के एविडेंस बेस्ड हमें इंटरवेंशंस प्लान करने हैं, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, और उनको समय समय पर एक बहुत ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन एविडेंस को पेश करना, उनको एक्सेप्ट करना और एसओपीज में चेंज करना। तो मुझे आज यहाँ पर बुलाया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और जाते जाते एक और चीज है रिसर्च के बारे में। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था कि गत वर्ष में 87% मर्द चाहते हैं कि पत्नी उनकी बातें सुने। तो इस प्रकार का जो रिसर्च है, मतलब एक तो पहली बात यह है कि 100% चाहते हैं कि हर कोई मेरी बात सुने, पर वास्तविकता कितनी है वो एक अलग इशू है। तो रिसर्च इट शुड बी वेरी pinpointed, very practical, and applicable to the day-to-day SOPs. Thank you very much. बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही रोचक ढंग से और व्यावहारिक पहलुओं को छूते हुए अपना एक उद्बोधन दिया। पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, हमारे मंच पर सुशोभित है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि वे इस विषय पर उद्बोधन दें।
मेरे मित्र ने पहले ही मेरी काफी समस्याएं समाधान करके बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और बहुत सारी बातें तो मैं बता दी। सम्मानीय मंच, परमादरणीय पिछली क्लास सर, मैम, श्रीधर साहब, ताजी और मेरे मित्र मकरन जी, ये मुझे भी मेरे लिए भी आई ओपनिंग है जो मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। जितने प्रकार की इनिशिएटिव्स और एक मंच पे ला करके कई विभागों को और कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव्स को लाना करना, ये मैं नहीं समझता था कि पुलिसिंग का भी ये एक पहलू है जो जिससे मैं काफी अनुभव था। यद्यपि टूरिज्म की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उतना जरूर मेरे नॉलेज में था, बट it is really great to know that so much of work is being done and pure research work is being done। और हमारे पुलिस के ही साथी इतना उम्दा काम कर रहे हैं जो आपको स्ट्रिक्ट हुए हैं हमारे सामने। It's very happy to know that। परिमल के चंद्रदाता और के जनक विराजमान है ऋषि शुक्ला जी। जब हम लोग मैं यहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे, आप इंटेलिजेंस पे, और हम अपनी जब दीघा अनुष्ठी वोट कर डालते थे, शहर में कुछ कर डालते थे, तो आप ही हमें बचाते थे सीएम के पास उनकर हमें शिकायतबाजी की चीज सही पर्सपेक्टिव देने में बहुत मदद करते थे। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर। मित्रों, जैसे बात हो रही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में उठाया कमिश्नर साहब ने, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी से सेफ्टी की ओर मूव करने का जो हमारा उत्तरदायित्व हमने लिया है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और उसको विभिन्न साथियों के साथ मिलकर के करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे साथ में है। ह्यूमन विमेन संस्था हमारे साथ में टेक्निकल पार्टनर के रूप में हमें सहयोग कर रही है, और मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग बहुत आगे बढ़कर हमारे साथ इसमें काम। तो पूरा उद्देश्य यही है कि हमारे डेस्टिनेशंस जो है वो कैसे सेफ, एक पैराडाइम शिफ्ट हो जो कि इंडिविजुअल इंटरवेंशंस की मोहताज नहीं हो, इंडिविजुअल लोगों की अपनी कैपेबिलिटी कितनी सिक्योरिटी वो ले सकते हैं उससे मोहताज नहीं हो, बल्कि सिस्टम ही ओवरऑल सेफ। जैसे कि हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कोई शहर सेफ माने जाता है। मुंबई में रात में 12 बजे की 1 बजे भी महिलाएं जाती है तो बिल्कुल सेफ मानी। वही दिल्ली हमारी कैपिटल, वहां पर ऐसा नहीं है। ये कल्चरल मिलियू जो है ये काफी कुछ इसके पीछे काम करता है, और इस प्रोजेक्ट में इन्हीं सब चीजों को एड्रेस करने का प्रयास किया है। बाय एंड लार्ज पुलिस तो जब घटना हो जाती है तो उसके बाद ही पिक्चर में आती है, यद्यपि कई बार प्रिवेंटिव चीजों में भी बहुत दखल रहता है, परंतु बड़ा रोल तो उनका तभी आता है। परंतु क्या हम अपने डेस्टिनेशंस को पहले से ही इतना सेफ बनाए कि वो क्योर वाली जरूरत ही नहीं पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माहौल ही इतना अच्छा हो, सोलो विमेन ट्रेवलर्स हो या ग्रुप विमेन ट्रेवलर्स हो, हमारे घर की माताएं बहनें हो, कभी घूमने जा रही हो, स्वतंत्रता के साथ घूम सके, किसी के मोहताज नहीं हो, कोई मन में भय नहीं हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं हो। कैसे कैसे ऐसा माहौल जनरेट किया जाएगा, ये एक चैलेंज है हमारे सामने। यद्यपि इसका मतलब कतई नहीं है कि मध्य प्रदेश में हमारी डेस्टिनेशन सेफ नहीं है, बहुत सेफ। मध्य प्रदेश बहुत सेफ प्रदेश माना जाता है और हमारी डेस्टिनेशन बहुत सेफ है। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सोलो विमेन ट्रेवलर्स भी आने लगी हैं और ग्रुप्स ऑफ विमेन आने लग गए हैं, जो नया ट्रेंड उसको बन हुआ है। तो इन सब बातों को दिमाग में रख करके प्रिवेंशन की दृष्टि से क्या करें, कैसे हम लोगों का जो माइंडसेट है उसको चेंज करें, उनको सेंसिटाइज करें। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, या जो हमें फ्रंट लाइन में दिखते हैं जब भी हम किसी टूरिज्म डेस्टिनेशन पे जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग काम करने वाले, कैसे उनको हम ज्यादा बेहतर सेंसिटाइज करें कि विमेन ट्रेवलर के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये उनके इधर हम कैसे एटीट्यूडनल चेंज लाए, ये इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। और दूसरा जो अहम हिस्सा है, कोई भी व्यक्ति उतना ही सेफ है जितना वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। तब यूक्रेन वाले युद्ध के बाद तो हम सब देख ही रहे कैसे पिट रहा है बेचारा। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता, वो न्यूक्लियर पावर होता, तो किसकी हिम्मत थी उसके ऊपर आक्रमण करने की। तो अगर हमारी विमेन को हम स्ट्रॉन्ग करें, और स्ट्रॉन्ग केवल
शरीर से स्ट्रांग नहीं होता। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है, सोशल एम्पावरमेंट भी बड़ी चीज होती है। तो कैसे वो एलिमेंट लाए कि हमारे क्षेत्र में जहाँ पर टूरिज्म होता है वहाँ की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम स्किल दें इस प्रकार की जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड स्किल्स है, उसकी हमने पहचान की गई। 30 स्किल सेट्स बने और उनकी एक वृहद ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। 10,000 महिलाओं को सीधे सीधे स्किल देकर के रोजगार से जोड़ने की इसमें व्यवस्था है, ताकि हमारे टूरिज्म सेक्टर से, जो कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो। और जब वो इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग होगी तो उनकी से भी ज्यादा होगी सोसाइटी में, और फिर जल्दी कोई हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो ये इनबिल्ट है उसमें। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दूसरा इसका पहलू। और तीसरा पहलू ये है कि जब बिल्कुल बात आ ही गई तो और दो हाथ कर ले, तो फिजिकल एम्पावरमेंट भी इसका बहुत बड़ा है। 40,000 महिलाओं को इसमें फिजिकल जो सुरक्षा की, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका काम वृहद स्तर पर शुरू हो, यानी कि उनका आत्मविश्वास इतना बढ़े कि वो कभी भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो स्वयं भी निपटने में सक्षम हो। तो ये तीनों एस्पेक्ट पे इस प्रोजेक्ट में काम हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि अगले 2 वर्षों में इस परियोजना का इम्पैक्ट इतना हो। और ये भी बता दूं आपको कि पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का इनिशिएटिव लेकर के इस प्रकार की वृहद स्तरीय पर भारत सरकार बहुत उत्सुकता से देख रही है। इसके रिजल्ट्स देखना चाहेगी कि क्या इसका रिजल्ट आता है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसा हमारे इस फिल्म में भी बताया गया था, WTM लंदन जो 2021 में हुआ, वहां पर इसको वंस टू वॉच कैटेगरी में रखा गया है। इंटरनेशनली पीपल आर गोइंग टू वॉच हाउ वी आर गोइंग टू फेयर इन दिस पर्टिकुलर endeavor, how far we are going to reach to our goals. And जितने भी इंटरनेशनल पूरा पेज आ रहा है बहुत it is gathering a lot of appreciation. Now the responsibility is also more that we have to deliver. तो इस प्रकार की कार्यशालाएं जो यहाँ पर हो रही है और इसके बाद भी लगातार सीरीज और कार्यशालाएं पूरे प्रदेश में होंगी। हम उसमें साथ में मिलकर के काम करेंगे और हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाओं का जो अधिकार है हर जगह समान करना, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो और स्वतंत्र होकर के खुल करके हमारे प्रदेश को घूमे। यहाँ के जितनी भी विभिन्न आकर्षण, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हेरिटेज हो, किसी भी प्रकार की जो घूमने के यहाँ पे आकर्षण के केंद्र है, उनमें उनके विभिन्न ट्रेवलर्स की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, जैसे ही स्थितियाँ और सम्मानित होंगी, वो भी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आते ही हैं और आना शुरू करेंगे। तो हम उनको एक बेहतर माहौल दें और जहाँ पर वो महिलाएं, पर्यटक बहुत सेफ महसूस करें और थॉरली एंजॉय करके जाएं। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ इस अच्छी कार्यशाला। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे प्रशिक्षण शाखा से और पुलिस के साथ, हमारा टूरिज्म के साथ जो MOU हुआ है उसमें हम अपने एंड पे और भी अतिरिक्त उत्साह के साथ आपके साथ इस कार्य में शामिल हो सकेंगे सर। और हमारे बीच विशेष पुलिस महानिदेशक अग्निशमन आदरणीय अरुणा मोहन राव मैम उपस्थित हैं, जिन्होंने महिला अपराध शाखा एवं प्रशिक्षण शाखा में पदस्थापना के दौरान वीमेन सेफ्टी इश्यूज एवं ऊर्जा हेल्प डेस्क को काफी रचनात्मक दिशा दी। मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि वीमेन सेफ्टी एंड गवर्नेंस विषय पर अपना अमूल्य उद्बोधन। आदरणीय ऋषि शुक्ल सर, श्रीधर, ममता जी, शिवशेखर जी, मदन और उपस्थित सभी महानुभाव। सर्वप्रथम मैं सभी लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ। केरानी, सीमा, ज्योति सब मेरे साथ काम किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और हम लोगों के लिए रिसर्च करना और या बुक लिखना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि व्यस्तता के कारण समय देना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने उस जज्बा को कायम रखा
तो मुझे बहुत खुशी है। और स्पेशल मेंशन फॉर कार्तिकेयन, being a man, he has taken the onerous job of trying to identify domestic violence cases. Mostly you will find कि सिर्फ women ही इस field में ज़्यादा research करती हैं. So Shanu, you are also part of the congratulatory team for motivating him, I think. And we would definitely like to share the conclusions that you will draw from Karthikeya's perspective. I'm sure that it will show new light on the issue. And दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहली बार मैंने मकरन को इतना लंबा बात करते हुए देखा है, इतना कम बात करता है वो. You have to prod him all the time to speak, but I think कमिश्नर भोपाल बनने के बाद उनका जो है कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका बहुत बदल गया है. Very happy to hear. He pointed out some very practical and realistic things. So it's very, and we're also, it's always a pleasure to interact with Shiv Shekhar Shukla, who has a very open mind and very concerned and sympathetic towards women's issues where tourism is concerned. 2017 हम लोगों के लिए पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल था. It was a landmark year in which the DG research cell was conceptualized and executed by the then DG Mr. Shukla ji. इसके पहले हम लोगों का जो ट्रेनिंग या फिर हम लोगों का जो भी इन सर्विस ट्रेनिंग्स रहते थे, they were very routine. जैसे हम लोग IPC, CRPC या एविडेंस एक्ट सिखा के हम लोग ट्रेनिंग के नाम से हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको हम सिखाते थे. So these were very very mundane kind of trainings which जो लाइन में पड़े हुए लोग हैं या जो फील्ड में काम नहीं कर रहे उन लोगों को भेजा जाता है. These trainings used to take place. But after 2017 there was a new look towards how people need to be trained. And जब वर्ल्ड इतना बढ़ रहा है, इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये महसूस किया गया कि वी नीड टू आल्सो अपग्रेड आवर ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. तो बट वेरी फॉर्चुनेटली सर के टाइम में ये बहुत एक गति दिया गया था और फॉर्चुनेटली ट्रेनिंग ब्रांच में ऐसे अधिकारी आए और ऐसे टीम्स है ट्रेनिंग ब्रांच में जो उसको आगे बढ़ाते गए. एंड इट इज वेरी कमेंडेबल कि सिर्फ 4-5 साल में एविडेंस बेस्ड जो ट्रेनिंग जो रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पे ऊर्जा डेस्क जो स्थापित हुए हैं और बहुत सारे रिसर्चेस अभी चल रहे हैं जिसके रिजल्ट्स जो है वो आगे आने वाले सालों में हमको दिखेंगे. एंड हमारा बहुत सौभाग्य है दैट MOUs have been signed with institutions like Satyarthi Foundation हो या Oxford University हो and so many other well-known universities and institutions of the world. तो एक बहुत futuristic जो हमारा एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च प्रोग्राम है उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है. एंड वी विल नीड ऑफिसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वर्क. आई नो दैट देयर आर मेनी ऑफिसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, so we need to just tap them and take this forward. The basic theme of the conference last year and this year is women's justice to women and access to victims, to women victims. So in 2020 when the crime against women branch was formed in Madhya Pradesh, earlier crime against women used to be dealt with by the AJK branch. तो जब 2012 में ये नया ब्रांच खुला था तो बहुत एक रिजेंटमेंट भी था, कुछ अनएक्सेप्टेबिलिटी भी था. And especially from main officers, I used to find a lot of negative vibes coming from them. कि इसकी क्या जरूरत है, ये तो चल ही रहा था, और why do we want to focus on this issue? So but
officers at that time were firm, and also the political disposition was also firm that we needed something like this. And then, as we know, Nirbhaya happened and everything, it just took off. So, being the first ADG of the cell, I had to work extra hard. The sir also knows how many efforts had to be done to just start the whole thing, and then उसको फिर बरकरार रखने में, उसके इनिशिएटिव्स लेने में, और उसको एक स्मूथ मैकेनिज्म के रूप में उसको डेवलप करने में बहुत मेहनत लगा। लेकिन आज हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि भले ही हमारे आंकड़े जो भी हो, जैसे निर्मल ने कहा, बिकॉज वी बिलीव इन registering basis. So there is a feeling, and there is also in the society there is awareness that Madhya Pradesh police is taking initiatives towards women's safety, and setting up a forger desks हो, या फिर अपना response system हो, या dial 100 हो, अपना 1090 women helpline हो. So many initiatives have been taken. And but I think there's still a long way to go, and these kind of research and these kind of stakeholder meetings are very important to take this thing forward. और मैं जीवा से और एजेंडा रिसोर्स सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, और आगे भी मैं इसमें काम लगातार करती रहूँगी। एंड आप सब लोगों की कोऑर्डिनेशन और सहभागिता से जरूर हम मध्य प्रदेश को एक और मध्य प्रदेश की सिटीज को सेफ और सिक्योर बनाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस तथ्यपरक उद्बोधन के लिए। जैसा कि मैम ने बताया और विनीत कपूर सर ने पहले बताया कि आज परिमल को हम जिस रूप में देख रहे हैं, उसका बीजारोपण मध्य प्रदेश पुलिस के मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक रहते हुए आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला सर द्वारा डीजीपी रिसर्च एंड पॉलिसी सेल के रूप में किया गया था। सर की यही परिकल्पना परिमल के रूप में परिपक्व होकर आज हमारे सामने है। मैं सर को सुनना एक अलग ही अनुभव होता है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर हम अपना अमूल्य उद्बोधन में express करें। मंच पर उपस्थित मेरी सहयोगी श्रीमती भास्कर जी, श्रीधरन जी, ममता जी, सभी खिलाड़ी, this is indeed a very, I would say, pleasant experience to be here. All these young women who have been working very hard in the policing field. मैं शुरू करूंगा पुलिस women police officers in MP में से। We decided कि हम पुलिस ऑफिसर्स को जो भी फील्ड में असाइनमेंट हो, इजी या डिफिकल्ट, वो हम जरूर देंगे। There were places where we encouraged police officers to go, difficult places, and I'm glad to say most of them were willing to do it. हमारे इंटीरियर के पुलिस स्टेशन में इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में, टीआई के रूप में महिलाएं जिनको की बड़ा हिचक होती थी भेजने में, उनको ज्यादा में हिचक होती थी, हमारे अधिकारियों को भेजने में हिचक होती थी कि अगर वो जाएंगी तो संभाल नहीं। ऐसा हुआ नहीं, बहुत अच्छे से सभी जगह महिलाओं को जहां भी भेजा गया उन्होंने उस काम को एक्सेप्ट किया और देखिए ये जरूर बात कि ऑल ऑफ अस, हम सब ये चाहते हैं कि महिलाएं अपने कैरियर में आगे बढ़ें, और उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं, वो फैमिली भी देखती है। इन मेनी अ टाइम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चैलेंज एरिया में जाने में महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी हिचक होती है। तो नॉट कि ओनली महिलाओं को हिचक होती है,
men are equally afraid of leaving their comfort zones. But as I said, most women are willing to go out and accept the challenges and deliver. The last few decades have been an extraordinary change as far as women in India are concerned. एक जमाने में जहां women literacy 5% ही हुआ करती थी, वहां आज women have reached almost all areas जहां पर उनको पहुंचना चाहिए, आगे भी बढ़ेंगे. The only caution therefore is that जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड होती है उतना उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस भी होती है. टेक्नोलॉजिकली जितना हम चेंज कर पाए वो तो बहुत ही ह्यूमंगस रहा. मतलब एक्सट्रीमली हम in my own lifetime I have seen from a time when there was no communication to the time where everything is instant. आप सबने देखा है whatever could not happen in, let's say, 300 to 400 years of rules, of butchers and others, has happened in the last 10 years. Every small village of India has now globally connected and connected to the social media. It's an amazing transformation technology. परंतु जो अगर इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ अगर हमारा जो ह्यूमन फ्रेंडली है वो भी इवॉल्व हो जाता तो क्या बात थी, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हम लोग चेंज बहुत डिफिकल्टी से होते हैं. Therefore, the more women are coming out, the more difficult situations they are facing. But ये जो एडवांसमेंट है ये बहुत स्टडी है, प्रोग्रेस इज वेरी नोटेबल. एक जनरेशन में हम कुछ अचीव कर लें ये शायद संभव ना हो. These things will take time and it is initiatives with all stakeholders जो उसको एक ऐसी जगह ले जाने में सफल हो सकते हैं जहां पर एक्चुअली में women's safety no longer remains an issue. I would so to say that like Makrand, I am also in a two-daughter club and my daughter, when she was studying in a very safe city like Indore, very safe as far as cities go, तो रात को 9 बजे हमको एक चिंता होती थी कि हम इससे बात करें. When she went out for the US, हम 3-4 दिन उससे बात नहीं करते थे. हमारे मन में चिंता नहीं होती थी कोई. हालांकि रेप्स इन US statistically probably more than in India, but the concept of safety. बिटिया जब दिल्ली में पढ़ के या नौकरी के बाद घर जाने को निकलती है तो कई बार ऐसे देखे गए कि माँ या कोई उससे लगातार फोन पर बात कर रहा है टू इंश्योर दैट शी इज इन कनेक्शन. तो वो जो परसेप्शन ऑफ इनसिक्योरिटी है दैट इज अ मेजर कॉज एंड इट इज नॉट अ परसेप्शन. There have been incidents and there have been bad incidents. People have faced it, but things are changing. ये जो चेंज है ये भी बहुत स्टडी है और सर्टेन चेंज नॉट हैपन ओवरनाइट. बिहेवियरल चेंजेस ममता जी ने बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए. मैं आई वुड सजेस्ट टू विनीत की ममता जी का वो एक्सपीरियंस अगर हम पुलिस में जेंडर इशू को मेल एंड वीमेन पुलिस ऑफिसर्स को लेके अगर हम डुप्लीकेट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व कि क्या रिजल्ट है. क्योंकि जैसे चैलेंज बनता है मेजर चैलेंज विच एज सीनियर पुलिस ऑफिसर वी फेस इज कि भाई हमारे अपने यूनिफॉर्म सर्विस में जो मेन एंड वीमेन है इनके बीच में कोई इश्यूज ना. वेरी मेजर चैलेंज एंड कंसर्न. उसको लेके भी कई बार वी गेट ओवर प्रोटेक्टिव विद अवर विमेन ऑफिसर्स. इससे कि भाई इसको हम नहीं लेते. जैसे सब it's not always that we don't trust the women officers to deliver. It is also a matter of concern of जैसे हम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वैसे ही जो महिला हमारे डिपार्टमेंट में उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. बट प्रोटेक्शन does not serve the purpose. We have to actually have to let them go out and handle the situation. I particularly remember that there was one incident with Madran would also remember that Gandwani there was Gandwani thought there was a major communal situation with developed on a modern. And the in charge was the lady police officer. He did not turn back
He led from the front. तो जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दोगे, इतना वर्क को अक्नॉलेज करोगे, इतना उसके सेल्फ एस्टीम को आप सपोर्ट करोगे, उतना आप उसको और उसकी टीम को मोटिवेट करोगे अच्छा काम करने। When we started this experiment with the wood judges about some 3-4 years back, there was a lot of skepticism कि ये सब तो हमको पता है, इसको करने से क्या फायदा होगा, तो हम कर ही जाएंगे, महिला डायरेक्टर्स बना रहे हैं। But then when we used the research methodology of having control police stations and different things, it gave us results which are very, very specific and which have been used in policy prescription. So ये जो issues हैं, I'm particularly impressed by Dr. Shanu and Karthikeyan, because in design, if we can do these changes, we probably would allow a system which leads to much better results. Dr. Sridharan, I mean, like, I've been last 25 years, we've been seeing that when we plan a city, the concerns of public safety and security have to take very significant priority and including inclusion in laws. For example, if I make a mall, I have to give some sort of it's legal to give access to challenged people. It is also mandatory for me to make washrooms for men, women, children, and whatnot, and number of people footfalls. But there is no law. It says that we have to put so much amount of CCTV cameras, so much amount. So for safety and security, the planning component still gets a less priority, and therefore, in financial outlays, it's always left there. I do not know that though we had really tried to work with smart city projects here to include smart police stations, the part is not probably no better. Whether we have been really able to incorporate them in the design stage. That is one idea again which is very essential, and that is why the strength of this particular workshop, where we have brought a lot of different stakeholders together to deliberate and to lead to some amount of conclusions. No single research project or even series of projects can solve this problem overnight, because अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर आगे की जनरेशन क्या करेगी? इसलिए we have to keep working on it. There is a huge gap between what should be and what is, and this gap probably can never be fulfilled, not even by the Lord, because there's no perfection. Anything you want, there's always room for improvement. All of us want to reduce that gap. And even if you take an inch of effort to reduce the gap to a certain extent, and it's able to sustain you, then you're wrong. Because we are, after all human beings who have our limitations. I'm grateful to Vinny that he called me here to meet all of you, and particularly to see the achievements which professors have been doing. I'm grateful to all the people here to keep illuminating me on several things. While I have a lot many decades of experience with me, yet each time you are willing to listen to learn. So, friends, listen, absorb, and then do your best. Best wishes. Thank you so much. सबको एक किताब रेकमेंड करती है, इट्स कॉल्ड इनविजिबल विमेन, जो वो बताती है, I don't know how many people have read it,
कि रिसर्च जब होता है कोई भी डिजाइन या कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, आप औरतों पे वो टेस्ट नहीं करते बिकॉज इट टेक्स मे बी दैट मच लॉन्गर दैट। तो जैसे अगर आपके वो कार में वो क्या बोलते हैं जो बैग्स निकल के आते हैं, एयर बैग्स है, कार्डियक ट्रीटमेंट्स है, pills का डिजाइन, even toilets का डिजाइन, women need more space, हाँ, they've got kids, they have to change diapers mostly, का size और men के बाथरूम का size same है, so there are a lot of interesting insights that tell you that women are, you don't design with that perspective। तो आपने इन्होंने बोला तो मुझे वो बात it's a must read, you must read it to realize how we have just not looked at when people are designing products and services and such। Thank you। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम अब हमारे बिल्कुल अंतिम चरण में है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हालांकि आप लोगों को जो फोल्डर दिया गया है उसमें सारा मेंशन है। ये प्रोग्राम जैसे कि शुरू में बताया था 3 दिवसीय है। आज ये हमारा ऑफलाइन मोड में था, कल और परसों जो है ये ऑनलाइन होगा। और उसके जो लिंक है वो आप सभी को आप चाहेंगे तो मिल जाएगी, तो आप उसको ऑनलाइन पूरा उसमें शामिल हो सकते हैं। अब मैं स्मृति चिन्ह के लिए सबसे पहले हमारे बीच में डीसीपी भोपाल रियाज इकबाल सर मौजूद हैं। मेरा सर से अनुरोध रहेगा कि कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मेरा डीसीपी हेडक्वार्टर और परिमल के सचिव डॉक्टर विनीत कपूर सर से अनुरोध है कि स्पेशल डीजी अर्णव मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुलिस अधीक्षक भोपाल किरण दत्ता के बेटा मैम हमारे बीच में है। मैं आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला सर का को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैम आपसे ये अनुरोध है कि हमारे बीच कमिश्नर पुलिस मकरंद देवस्कर सर। डायरेक्टर एसपीए आदरणीय श्री एन श्रीधरन सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं सीमा अलावा मैडम को आग्रह करूंगा। और अंत में अब ममता कोहली मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निधि सक्सेना पुलिस अधीक्षक से आग्रह करूंगा। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर विनीत कपूर सर से अनुरोध है कि आभार प्रदर्शन करें। आज के इस गोष्ठी में हमारे अतिथिगणों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर आदरणीय ऋषि शुक्ला सर का कि उन्होंने इस के लिए सहमति दी। सर का इसलिए भी आभार मानता हूँ कि सर बार बार बोलते हैं कि मुझे मत बुलाओ और मेरा वो रेस्ट करने दो, बट सर आपकी प्रेरणा से ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं और आपका संबल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दिशा आपने दी है। मैंने अंग्रेजी के 2 शब्द बहुत बार पढ़े हुए थे, पर मुझे कभी समझ में ज्यादा मतलब मैं उनका कभी पुलिसिंग के हिसाब से कभी सोचा नहीं था। एक एनेक्डोट और एक एफिकेसी। तो ये दोनों शब्द जब मैं साहब के पास में स्टाफ ऑफिसर था, सर डीजी थे, मैं स्टाफ ऑफिसर था, तो वो हमेशा सर ये बोलते थे कि परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड द रियल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस या इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। तो वो बोलते थे परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी पर काम करो, और 2 शब्दों को बहुत इस्तेमाल करते थे कि एनेक्डोटल पुलिसिंग एंड एफिकेसी ऑफ लाइक इंसिडेंट्स या उसके एनालिसिस। तो जब फिर मैंने इन तीनों चीजों को जोड़ा तो मुझे लगा कि ये जो है रिसर्च का यही पूरा एक दायरा है जिसमें काम करना चाहिए, और सर ने उसका इंस्पिरेशन दिया। तो डेफिनेटली सर आपका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है।
मध्य प्रदेश पुलिस आज इंस्टीट्यूशनलाइज कर पा रही है रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च सेल को, परिमल को या जेंडर रिसोर्स सेंटर को, और उसमें कुछ अचीव कर पा रही, तो वो आपका एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। और आई एम सो थैंकफुल टू यू, वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये दिशा दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अरुणा मैम का कि आपने विशेष रूप से आज उपस्थित हुए। आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे काम किए हैं, महिला सुरक्षा के बहुत सारे चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज आपने किया। निर्भया कांड के बाद से मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है पूरा विमेन सिक्योरिटी विंग, उसका प्रादुर्भाव आपके माध्यम से हुआ है, और फिर ट्रेनिंग में आकर के आपने रिसर्च एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया और उसको सुदृढ़ किया। उसी तारतम्य में अनुराधा शंकर मैडम का नाम लेना चाहूंगा। वो आज किन्हीं कारणों से हमारे बीच में नहीं है, पर उनके मार्गदर्शन से ही आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया। उनका विजन और उनका परसिवरेंस इन सब चीजों को लगातार करते रहने का और हम सभी को प्रोत्साहित करके इस काम में लगाए रहने का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके कारण ही रिसर्च एक्टिविटीज को और एविडेंस बेस्ड पोलिसिंग को गति मिल पा रही है। उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिव शेखर शुक्ला सर का, जो जिन्होंने इस चीज को बहुत प्रोत्साहित किया है। विशेष रूप से मैं मंगल देवस्कर साहब जो कमिश्नर पुलिस हैं और साथ में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपको जिस तरीके से उन्होंने बताई बातें, तो ये एक अच्छी इंसान के अंदर से ही निकल सकती हैं। और वही जो एक डेफिनेशन ऑफ अच्छी पुलिस वाला कौन होता है, तो सर उसमें यही एक मेरे ख्याल से उसका उत्तर भी है कि एक ये होता है। दूसरा कि जो अंदर से अच्छा हो वो डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से चीजों को करने की कोशिश करता है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि अगर मेरे साथ ये है तो फिर लोग क्या कहते हैं, जो एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, वो उसके उसमें हमेशा जीवंत रहे। तो मुझे लगता है वो जो जीवंत रहने की जो भावना है, उन भावों को आप हमेशा बनाए रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि मैं भी टू डॉटर क्लब में हूँ, और तो इसलिए मेरे को भी ये मेरे पे भी बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तीनों जने, और कई तो वो जो है, पर मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। तो सर ने आज बहुत ही वो तार बिल्कुल सही जगह बजे मेरे लिए भी, तो थैंक यू फॉर दैट सर। मैं विशेष रूप से सर एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ऋषि सर ने बोला कि काफी सारा चीजें में चेंज आया है। अभी मैं 5-6 बैचेस डीएसपी के इकट्ठे मेरे सामने से निकले हैं एकेडमी में। 3 बैच पुराने डीएसपी को अभी तक फील्ड पोस्टिंग नहीं देगी। 3-4 डीएसपी ऑफिसर्स नेक ऑफिसर्स मेरे पास आए और ऐसी बैठ के जस्ट कर्सी बेंच में आए थे। वो मोस्ट ऑफ देम सेड कि सर आप धीरे धीरे हमारी पोस्टिंग्स हो गई। बहुत अच्छा, बहुत शरीफ से लोग हैं, वो बहुत अच्छे भले लोग हैं। तो मुझे लगा कि मैंने बोला हाँ कहाँ कहाँ हो रही है, कुछ कुछ बता दो। तो बोले नहीं सर इसमें अभी ऐसा है कि हमारे बैच की पहले लड़कियों की पोस्टिंग होगी और वो फील्ड में जाएंगे। मुझे लगा उनके मन में कुछ विद्वेष, कुछ पीस की हमारे को मतलब नहीं भेज रहे हैं, हम लोग नक्सलाइट भी कर रहे हैं और ये भी कर रहा है। तो मुझे इतनी सुखद अनुभूति हुई जब उसने ये बोला कि सर ऐसा है कि लड़कियों को पहले पोस्टिंग देना बहुत जरूरी है, और उनको अभी दे देंगे तो वो 1-2 साल अच्छी ये जो है पोस्टिंग कर लेंगी, और फिर उसके बाद उनको मैटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। हम लोगों को तो बाद में भी मिल जाएगा तो हम लोग लगातार कर पाएंगे, वो नहीं करता। तो ये इनके मुंह से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बहुत ही हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि ये लोग ये बात करते हैं। मैंने 2015-16 में बहुगुणा मैडम थी एसपीए की डायरेक्टर,
उन्होंने पहली बार उनके मुंह से मैंने ये सुना था कि जो महिलाओं, जो पुलिस की महिलाएं, उनका जो करियर प्लानिंग है वो विभाग को पॉलिसी इशू पे करना चाहिए एंड थ्रू द लाइफ कोर्स ऑफ अ वुमन। कि जो वुमन की लाइफ कोर्स है उसमें उसके इनिशियल 5-7 साल ऐसे हैं जब वो फील्ड की बहुत अच्छी जॉब कर सकती है, बीच के 8-10 साल ऐसे हैं जो तब नहीं कर सकती, और उसके बाद पुनः उसको फील्ड दे देना चाहिए। तो वो मतलब विभाग शायद उसको ऐसे कर रहा है कि अब हमारे जो नए ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और वो ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा काम हो रहा है, बनिस्बत विद्वेष रखने के कि हमें नहीं पोस्टिंग मिल रही, महिलाओं को मिल रही है, तो उन्होंने इस तरीके से उसको पॉजिटिव दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की मेन स्ट्रीमिंग भी हो रही है और ये खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीधरन साहब का। आपका सर बहुत बड़ा विजन है। हम लोग पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वो भी सर की ही देन है, ऋषि शुक्ला सर की। ऋषि शुक्ला सर ने ही पुलिस इंटर्नशिप को भी प्रमोट किया और उसी के अंतर्गत जो है एसपीए से जब एमओयू हुआ, मैडम ने मुझे करवाया था, तो सबसे पहले छात्र के रूप में लाइक वी गॉट you as our first intern. So, so pleasant to know. And sir, he was so devoted that he said that I will not take up any corporate job if you guys allow me to do further research on my app, which I'm making. And I will not take up any job, but just if I get some stipends from somewhere, and I'll keep on working on this domestic violence related app. So that was the commitment he had. I think we failed him to keep him in that with us, but his commitment still remains in spite of being in that kind of a corporate thing. We twice changed the dates, and within the short notice of 2 days, he was always ready to come for this program because he's so much aligned with this particular theme. So thank you. We need young men like you to be devoted on this mission. I would like to thank Mamtaji for the kind of support she has given and British High Commission has given through their knowledge partnership with us, and through all the future trainings they have said that they will be supporting us on that front. I'm also thankful to all other colleagues, खासतौर पे जो परिमल के सदस्य लोग हैं, परिमल सोसाइटी में रियाज इकबाल साहब, अमित सिंह साहब, and there are many other officers who are now members of that. और वो लोग करीब 12-15 ऑफिसर्स हैं जो मेंबर्स हैं, और उन लोगों ने सब में अगम जैन भी थे, तो वो लोग यहाँ पे आए, मिस्टर गर्ग थे यहाँ, तो they supported it. I'm also thankful to Ashwath Ramchandran, who has beautifully designed the whole material posters, and he has been always a very, very supportive designer who gives us very nice brochures and other learning material. आप सभी एनजीओ पार्टनर्स के हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना कि आप सभी ने हमें सपोर्ट दिया और आज यहाँ पे आए। वीरेंद्र मिश्रा साहब अब मुझे दिख रहे हैं, तो आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ आए। नकी जान मैडम जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर हैं, सीएलपी प्रोजेक्ट में हमारे साथ आगे काम करने वाली है, और उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे वीरेंद्र मिश्रा सर का मैंने देख लिया उनको, और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी हमारा अच्छा आपका वो भी हाँ, तो मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, वीरेंद्र मिश्रा साहब का भी सम्मान बाकी है। मैं इसको आमंत्रित करूंगा कि वीरेंद्र मिश्रा साहब के लिए मैं सम्मान का। सर वीरेंद्र मिश्रा साहब ने भी एक रिसर्च में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, मैनी बुक्स on women related issues and child protection, and he is an authority now on these issues. So we would like request the secretary to felicitate
विनीत जी, आपको हम आमंत्रित भी करेंगे, 2 मिनट आप अपने रिसर्च का शेयर भी करें, क्योंकि 2 मिनट में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। Thank you so much. Dignities on the rise and colleagues और सारे मित्र जो बैठे हैं यहाँ पर. I just landed and I'm rushed from the airport straight to this place. And thankfully, खत्म नहीं हुआ था, so I could be part of it. So that's what Vinit was saying कि late होते हैं आप तो you won't get this felicitation from the dignitaries. So thankfully I got it. तो मेन जो काम जो रिसर्च है वो मेरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काफ़ी है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग. And as he said, I have written a book published by Sage. There are 2 books. One is stakeholders perspective. I have commissioned articles from the main practitioners, academicians, globally as well as from the country. काफी एक वॉल्यूमिनस वो बुक है, सेज ने पब्लिश किया था. उसके बाद में एक जो लेटेस्ट बुक थी 2015 में जो इस हुआ था, दैट वाज on combating human trafficking, gaps in policy and law. That's quite a research book. I wrote it when I was in USA doing my Humphrey Fellowship. और उस दौरान में और जो मेरा जो मेन मुख्य था कि कुछ जो मिथ्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और कुछ जो अंडरस्टैंडिंग में हम लोग के गैप्स हैं उसको किसी तरीके से उजागर किया जाए. And this time again I got into human trafficking का बिल आ रहा था. So when we were making the bill, so I was somehow part of it with Minister of Women and Child Development. So I had a lot of opportunity to work on human trafficking. And besides that, I do contribute to an NGO which works here called Samvedna, and which is working in Pedia community. Right now the organization is almost working with 5,000 children in 60 villages in 5 districts. So that is one thing, because Pedia is one of the vulnerable communities in the state, which needs attention. So started working long back and initiated the work when I was SDOP nursing girl, and then it has evolved, it has grown. अभी उसमें भी थोड़ा बहुत contribution चल रहा है. And latest book that I am writing is on community-based sexual exploitation. So community-based sexual exploitation, again, one like we have here, like Beria Bashar community, but this phenomena is there across the world. It is existing in Canada, it is existing in Southeast Asian countries, it is existing in America, it's all places. None of the continents are free of it. So the debate, certainly it goes if it is community-based sexual exploitation or is it community-based prostitution. That is one thing in the research we want to bring it up. So this is the latest venture I'm into. So this is how I have been working on women issues, on human trafficking. And another book which is there with the publisher, perhaps with an outlet, they may publish it on Bloom's, that is on transit. Because last state as NISD, National Institute of Social Defense, so we were working on transgender health also. And I always say, one part last year when we were celebrating Women's Day, so we celebrated Trans Women's Day in the National Institute of Social Defense, which was again a great enriching experience that we had. So this is how I'm connected on women issues. And research is on, the work is on. I hope it's going to continue. I'm so thankful for being very straightforward. Thank you so much. थैंक यू सर. और इससे पहले कि मैं आप सभी को लंच के लिए आमंत्रित करूं, मैं बताना चाहूंगा कि इत्तेफाक से मैं भी 2 डॉटर्स क्लब में शामिल हूं. आप सभी लंच के लिए साथ आमंत्रित. अमानत रख ली है 2 प्लेट की.